Hello aspirants, welcome to another video uh, regarding the solution of previous year GATE questions. The subject that we'll be handling today is engineering hydrology, and uh, from this subject we have compiled all the questions that has been asked in the recent years of GATE from the topic evapotranspiration and stream flow measurement. नाउ ये दोनों सब टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है गेट में जनरली, बट रिसेंट कुछ सालों में देयर आर सम क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड, तो वी डोंट नीड टू पुट दैट मच ऑफ एफर्ट इन इट, बट जितना क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आई थिंक हम लोग अगर उसको सॉल्व कर लेंगे तो विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टू सब्जेक्ट्स. तो शुरू करते हैं from the topic evaporation and stream flow measurement. Okay, now शुरू करने से पहले like always, if you are liking our videos, if you are liking our solution, please do like, comment and subscribe to our channel so that हम लोग आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कंपाइल कर पाए, उसको सॉल्व कर पाए और वीडियो बना पाए. So let us start with the first question. That has been asked. It was asked in 2001. And the question is isoplate. What are isoplate? ठीक है, तो isoplate क्या होता है कि equal depth of evapotranspiration जिस जिस point पे हो रहा है, if we join them by a line, then it is known as isoplate. Right? So isoplates are the lines on a map through points having equal depth of evapotranspiration. जिस जिस point पे evapotranspiration same है, अगर हम उन सारे points को एक line से join करेंगे, then the line that we get is known as isoplate. Next, 2003 में पूछा गया था, the plan area of a reservoir is given to you. The plan area is 1 kilometer square. अब आपको बताया जा रहा है कि the water level declined by 20 centimeters. So let's say del S, change in the water level is 20 centimeters. Since it is a declination, so I will write as negative. So 20 centimeters से का water level decline हुआ. Now during this period, the reservoir receives a surface inflow of 10 hectometers. ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि इनफ्लो जो हो रहा है रिजर्वायर में, surface inflow that is your 10 hectometer. Okay, so hectare क्या होता है? 100 hectare is equal to 1 kilometer square. So ये हमें याद रखना है. 100 hectare is equal to 1 kilometer square. ठीक है. So next देखते हैं क्या बताया गया. 20 hectometer are abstracted from the reservoir for irrigation and power. So abstract, that means outflow, is your 20 hectometer. Right? फिर बताया जा रहा है after the plan evaporation and rainfall recorded during the same period at a nearby meteorological station are 12 centimeter and 3 centimeter. तो यहाँ पे जो rainfall हो रहा है precipitation that is 12 centimeter. आपका जो evaporation हो रहा है evaporation is 3 centimeter. ठीक है, आपको बताया गया है pan constant बताया गया है, that is let's say K, pan constant is 0.7. Right, so what we have to calculate? We have to calculate the seepage loss from the reservoir during this period. हमें calculate करना है इस reservoir से seepage loss कितना हो रहा है. So what we have to do? We have to apply the water budget equation.
ठीक है, व्हाट इज द वाटर बजट इक्वेशन? इनफ्लो दैट इज IS प्लस प्रेसिपिटेशन, ठीक है, माइनस आउटफ्लो QS प्लस इवापोरेशन E दैट इज आउटफ्लो प्लस E एक्चुअल यहाँ पे, और ये वाला जो है दैट इज योर sorry, so here they have given 20 hectometer. Plain evaporation is given. So evaporation plane is given to you. तो हमें यहाँ पे एक्चुअल इवापोरेशन कैलकुलेट करना है, प्लस आपका जो है सीपेज लॉस, एनीथिंग एल्स इज इक्वल टू, सो इनफ्लो प्लस प्रेसिपिटेशन माइनस आपका एक्सट्रैक्शन, जितना वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, माइनस एक्चुअल इवापोरेशन minus plus is your seepage loss, that is equal to change in storage. अब change in storage जो है वो है नेगेटिव वैल्यू, सो दैट इज -20, ठीक है। सो अब हमें जो करना है, एवरी वैल्यू वी हैव टू कन्वर्ट इनटू, जितने जितने यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है हम लोगों को, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट देम इन टर्म्स ऑफ हेक्टर मीटर। तो फर्स्ट थिंग इज प्रेसिपिटेशन का तो वैल्यू दिया हुआ है, then you have your q is also given। हम लोगों को जो अभी चेक करना है वो है द वैल्यू ऑफ प्रेसिपिटेशन, p is given in terms of सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज 12 सेंटीमीटर, सो टोटल जो रिजर्वायर है उसमें कितना प्रेसिपिटेशन होगा, दैट विल बी योर 3 सेंटीमीटर। ओके, इवापोरेशन इज 12 एंड प्रेसिपिटेशन इज 2, evaporation is 12 and precipitation is your 3, will change, so it will be 3 सेंटीमीटर में है, तो आई कन्वर्ट इट इनटू मीटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आपका एरिया कितना है, टोटल जो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हो रहा है दैट इज 100, राइट, सो दिस इज योर 3 हेक्टर मीटर, ठीक है। QSI का वैल्यू तो सेम है, इवापोरेशन को हमें सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट कि टोटल इवापोरेशन कितना हो रहा है फ्रॉम द रिजर्वायर, एक्चुअल इवापोरेशन, what will be the value, 12 आपको दिया हुआ है, that means 12 by 100, I'm converting it into meter, centimeter to meter, multiplied by the pan coefficient, ठीक है, pan coefficient multiplied by the area, 1 kilometer square, that means 100 hectare, so in terms of hectare हमें कैलकुलेट करना है, हेक्टर मीटर के टर्म, so it will be your 8.4 हेक्टर मीटर, ओके। सो बाकी सबका वैल्यू तो सिमिलरली दिया हुआ है, स्टोरेज का वैल्यू देयर विल बी नो चेंज, ओके। सो नाउ सिमिलरली स्टोरेज के वैल्यू जो है उसको हम लोग अगर कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ हेक्टर मीटर, व्हाट विल बी द वैल्यू, 20 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इट इनटू मीटर, देन ओवर 1 किलोमीटर स्क्वायर, सो दैट मीन्स इट विल बी 20 हेक्टर मीटर, ठीक है। नाउ सारे जो वैल्यू हमें मिलते हैं, नाउ वी हैव टू place all these values in this particular equation. So IS का वैल्यू हम लोगों के पास है ऑलरेडी, that is 10, precipitation is 3, minus Q का वैल्यू is 20, evaporation का वैल्यू is 8.4, storage का वैल्यू we have to calculate is equal to -20. If you solve it, your storage S will be 4.6 hector meter, and the option is your D. So क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन तो इजी था, ओनली थिंग इज वी हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द कन्वर्जन, यहाँ पे इन लोगों ने इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया है थोड़ा सा बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस टर्म हेक्टर मीटर, ठीक। तो क्वेश्चन वाज इजी बट थोड़ा सा इसमें
they have increased the complexity by altering the units. So that's it. The ratio of actual evapotranspiration to potential evapotranspiration is always in the range of 0 to 1. This question was asked in the year 2000. Next, the top width and depth of flow in a triangular channel were measured as 4 meter and 1 meter. So आपके पास एक triangular channel है. The top width of the channel is 4 meter and the depth is 1 meter. ठीक है? The measured velocities on the center line. So here is the center line. Let's say center line में जो velocity है that is 0.2. Let's mark it 0.2. 0.8 meter below पे जो velocity है. Okay. So the measured velocities on the center line on the center line at the water surface and below the surface area. Okay. Sorry. The measured velocities on the center line at the water surface 0.2 meter and 0.8 meter. Okay. Right. So not here. आपका जो velocity है that is water surface में जो velocity है that is 0.2. Okay, the measured velocities on the center line at the water surface 0.2 and 0.8. Water surface में जो velocity है that is 0.7 meter per second. आपका 0.2 depth में जो velocity है, let's say this is 0.2. 0.2 depth में जो velocity है that is 0.6 और आपका 0.8 depth में जो velocity है that is this depth is 0.8. यहाँ पे जो velocity है that is 0.4. That is 0.4. Okay, so what they're saying कि 0 point surface level पे water surface पे आपका velocity is 0.7 meter per second. At a depth 0.2 velocity is 0.6 meter per second. At a depth of 0.8 meter the velocity is 0.4 meter per second. You have to calculate the discharge. So what is the average discharge? Sorry, what is the average velocity? In the open channel, average velocity is velocity at 0.2 plus velocity at 0.8 divided by 2. Okay? So what is the velocity at 0.2? It is 0.6 plus 0.4 divided by 2. That means it will be 0.5 meter per second. So now we have the discharge. So what is velocity? Now we have the velocity. So what is discharge? Discharge is equal to area multiplied by velocity, cross section area multiplied by velocity. So half into base into height, that is 4 multiplied by 1 multiplied by 0.5. That means it will be 1 meter cube per second. Which answer number 3. Okay. So similarly एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है इसमें. सेम क्वेश्चन है. आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक रिजर्वायर. देयर इज अ रिजर्वायर जिसका सरफेस एरिया इज 20 किलोमीटर स्क्वायर. ओके, द सेम मंथ द एवरेज रेट ऑफ इनफ्लो दिया हुआ है आपको. इनफ्लो इज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड. आउटफ्लो इज 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड. precipitation is 10 centimeter. Seepage is 1.8 centimeter. Storage change आपका दिया हुआ है that is 16 million meter cube. So 16 into 10 to the power 6 meter cube. You have to calculate what is the evaporation. This was asked in 2015. ठीक है, तो now हम लोगों को जो करना है, first thing is इन सबको you have to convert it in a single
यूनिट, हमें कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, तो सारे चीजों को लेट अस कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर. फर्स्ट इज योर प्रेसिपिटेशन. सो प्रेसिपिटेशन, सॉरी, फर्स्ट इज योर इनफ्लो. इनफ्लो का रेट है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो 10, एंड दे आर आस्किंग फॉर टाइम पीरियड आपका जो है दैट इज 1 मंथ. राइट. सो 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एक महीने में आपका होता है 30 दिन, एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, एक घंटा इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. सो दिस इज द टोटल इनफ्लो इन 1 मंथ. ठीक है. इनफ्लो की वजह से आपका सरफेस में कितना चेंज होगा, डिवाइडेड बाय एरिया. ठीक है. एरिया किलोमीटर स्क्वायर, सो वी हैव टू, kilometer to meter is 10 to the power 3, because it is square, so it will be 10 to the power 6. ठीक है. So now if you calculate this, it will be your 129.6 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर में करने के लिए I have to multiply this with, actually this will be 1.296 meter. We have to convert it into centimeter, multiply by 100, so 129.6 centimeter. Similarly Q, 15, 30 दिन होते हैं महीने में, 24 आवर्स, 3600 seconds, divided by 20 into 10 to the power 6, multiplied by 100 to convert it into centimeter. It will be 194.4 centimeter. Similarly, storage को हमें convert करना है in centimeter. Storage is 16 into 10 to the power 6 meter cube, divided by area, that is 20 into 10 to the power 6. So multiplied by 100, of course. So the value will be 80 centimeter. ठीक है. Now, so what is the total inflow? Total inflow is precipitation, sorry, inflow of water plus precipitation, that is the total input, I plus E. ठीक है. What is the total outflow? Outflow is Q plus S plus E, ठीक है, is equal to change in storage. Now obviously इससे ज्यादा the value of total input is less than total output, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है. So there will be a depletion, right? So this will be negative. डेल्टा स्टोरेज का जो वैल्यू है दिस विल बी नेगेटिव 80. सो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं अपना, जो जो मिला है 129.6 प्लस पी का वैल्यू हमें दिया गया है 10, माइनस क्यू का वैल्यू इज 194.4 प्लस एस का वैल्यू इज 1.8, और इवापोरेशन हमें कैलकुलेट करना है, राइट. एंड दिस इज इक्वल टू -80. So what is the value of E finally? E is equal to, get 23.4 सेंटीमीटर. अगर यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशन विल गेट E is equal to 23.4 सेंटीमीटर. ऑप्शन डी. नेक्स्ट 2022 में पूछा गया था, रेफरेंस क्रॉप इवेपोरेशन इज गिवन. सो लेट्स से दिस इज PET. दिस इज इक्वल टू 6 mm पर डे. आपको क्रॉप कोएफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ है, C इज इक्वल टू 1.2, और आपको सॉइल कोएफिशिएंट दिया हुआ है K, that is equal to 0.8. What will be your actual evapotranspiration? So AET is equal to आपका reference crop evapotranspiration, that is 6 multiplied by crop coefficient multiplied by your soil coefficient. So if you multiply this, it will be 5.76 mm. Option number A. So the next question is, it was asked in the 2023 of GATE. यहाँ पे आपको डिफरेंट, एक रिवर को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है, ओके, और डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ में आपको वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, राइट. यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज.
एवरेज डिस्चार्ज कंप्यूटेड बाय वेलोसिटी एरिया मेथड। क्वेश्चन देखने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स? आपका जो वेलोसिटी होता है इन एनी रिवर, एवरेज वेलोसिटी हमें, या फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी या तो 0.6 डी में कैलकुलेट किया जाता है, या फिर इट इज द एवरेज ऑफ वेलोसिटीज एट 0.2 डी एंड 0.8 डी। सो 0.2 डी में जो वेलोसिटी होता है, 0.8 डी में जो वेलोसिटी होता है, उसका रेशियो। सो यहाँ पे अगर हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, लेट्स कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। लेट अस मेक अनदर टेबल एंड लेट अस कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। तो फर्स्ट कॉलम में इसका तो एवरेज वेलोसिटी इतना ही होगा। लेट अस से दिस इज वी एवरेज, this will be 0.4, okay, this will be 0.76 plus 0.7 divided by 2, it is equal to 0.73. Next is 1.19 plus 1.13 divided by 2, 1.16. Next is 1.25 plus 1.10 is equal to 2 divided by 2, 1.175. Next is 1.13 plus 1.09 divided by 2 is equal to 1.11. 0.69 plus 0.65 divided by 2 is equal to 0.67, and 0.45 plus 0.42 divided by 2 is equal to 0.44. So these are the average velocities. Okay. How to calculate the area? Sorry, how to calculate the discharge? Corresponding to every average velocity, we can calculate the discharge. So how will we calculate the discharge? Discharge is width आपका दिया हुआ है 1.5, depth आपको पता है, and you multiply with the average velocity. So for the first section, 1.5 into 0.4 into 0.4 plus. Next is 1.5 into 0.7 into 0.73 plus 1.5 into 1.2 into 1.2 into 1.16 plus 1.5 multiplied by 1.4 multiplied by 1.175 plus 1.5 multiplied by 1.10 multiplied by 1.11 plus 1.5 multiplied by 0.8 multiplied by 0.67 plus 1.5 multiplied by 0.45 multiplied by 0.44. Okay, so this is your total discharge divided by, okay, so, oh, no, not divided by, so this will be your total discharge. This is your total discharge. So if you solve this, after addition and everything, they will come close to 8.5. It will come around 8.6 something, close to 8.5. Okay. और जो जितना डिफरेंस आएगा वो आएगा बिकॉज ये जो फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन है, इसका जो विड्थ होता है दैट इज नॉट एक्चुअली 1.5, ये थोड़ा इससे ज्यादा होता है यहाँ पे। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस इसमें थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, इट विल बी क्लोज टू 8. ओके, सो
I think this was the last question. Yes, this was the last question. uh, जितने सवाल लास्ट रिसेंट कुछ सालों में ये चैप्टर से पूछा गया था, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व देम। अब इन सारे क्वेश्चन में जितने आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इंक्लूडिंग गेट, आईएएस, सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम में इसी ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया इन्हीं के आसपास पूछा जाता है। सो देर विल नॉट बी मच वेरिएशन। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना दे, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली अगर आपने सॉल्व कर लिया, समझ लिया इनको, तो आई थिंक ये चैप्टर जो इवापोट्रांसपिरेशन जो चैप्टर है और स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट का जो चैप्टर है, यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक कि किसी भी प्रॉब्लम में आपको कोई परेशानी होनी। सो विद दिस विल कंक्लूड। सो लाइक ऑलवेज प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम लगे, किसी भी आंसर गलत लगे, तो प्लीज do comment in the comment box. As always, thank you so much.